अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, today's lecture is all about vectors। आज हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। आप किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो टर्म्स में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अ स्केलर क्वांटिटी आर सिंपली अ स्केलर इज वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। एक ऐसी क्वांटिटी की जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करें टाइम की, तो देखिए टाइम जो है, टाइम का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं इट्स 8 am, हम कहते हैं 8 am, ये उसका मैग्नीट्यूड है। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर टाइम, बट देयर इज नो डायरेक्शन दैट कैन स्पेसिफाई टाइम। तो टाइम की का मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होती, देयरफॉर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली टेम्परेचर, टेम्परेचर is another scalar quantity. Length, length is another scalar quantity. Volume, volume is another scalar quantity. Length, we say that this rod is 8 centimeter long. This rod is 8 centimeter long. So 8 centimeter long is enough for measuring the length. इसके लिए कोई डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है कि राइट से 8 सेंटीमीटर, लेफ्ट से 8 सेंटीमीटर है। The length is just having the magnitude. There is no direction specifying the length of a rod or anything. Therefore, the length is a scalar quantity. Similarly, the volume, when we say that the volume of the box is 12 cubic centimeter, then we don't mention the direction of the volume of the box because magnitude is enough for specifying the volume. Therefore, volume is another scalar quantity. A vector quantity, in contrast, is one that possesses both magnitude and direction. The quantity that possesses both the magnitude and the direction, एक ऐसी quantity जो कि सिर्फ magnitude बताने से determine ना हो सके, जिसके लिए हमें साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े, उस क्वांटिटी को बोलते हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है। हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है, नॉर्थ में लगाई है, ईस्ट में लगाई है, फॉरवर्ड लगाई है, बैकवर्ड लगाई है। तो हमें फोर्स के साथ साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, किस मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएगी किसी ऑब्जेक्ट पे और किस डायरेक्शन में लगाएंगे, देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लाइक वी से दैट कि किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कोई डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन हमें साथ ही उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है और किस डायरेक्शन में कवर हुआ है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से बेटे वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह के डिफरेंट बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो बेटे स्केलर और क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? अ वेक्टर हैविंग जस्ट अ क्वांटिटी हैविंग जस्ट द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड a scalar quantity, whereas a quantity that is having a magnitude as well as the direction, it is called the vector quantity. It is called the vector quantity. Now we see अब वेक्टर की नोटेशन क्या होती है? वेक्टर को बेटे यूजुअली हम लोग डोनेट करते हैं ए बी से और इसके ऊपर एक एरो डाला जाता है। This arrow is showing the direction of the vector, that this vector is directed from the point A to the point B. The vector AB, for instance, if we are taking this, the initial point is A and the terminal point will be B. The initial point of this vector will be A and the terminal point of this vector will be
B. This vector is directed from A towards B and it is denoted as AB with an arrow above AB. Okay. Similarly, another notation for this vector is the word, the symbol small v with the small line below v. ठीक है, v के नीचे अगर हम एक छोटा सा लाइन सेगमेंट डाल देते हैं तो इस तरीके से भी हम किसी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का? वेक्टर के दो नोटेशन हम पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट वन वाज ए बी। दिस notation was showing that the vector is directed from the point A towards the point B. This vector B is another notation for the same vector. We are showing that similarly we can write it B1, B2, B3 when we will be dealing with the three or more than three vectors. V के नीचे अगर हम एक छोटा सा लाइन सेगमेंट प्लेस कर देते हैं, this is showing the vector V. अब बेटे हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड और नॉर्म क्या होती है किसी भी वेक्टर की। मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड 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 ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड के लिए बेटे एक जो अल्टरनेटिव वर्ड्स है वो है लेंथ, सिमिलरली नॉर्म। हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और लेंथ ऑफ अ वेक्टर और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। All of the three things are directed towards the same phenomena. Magnitude, length और norm एक ही चीज के तीनों नॉर्म है। किसी भी वेक्टर ए बी के लिए जो भी उसकी उसकी मैग्नीट्यूड होता है, जो भी उसकी लेंथ होती है, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये दो बार हम लगा देते हैं इसकी दोनों साइड पे। दिस शोज द मैग्नीट्यूड। इट मींस दैट दिस is the indicator for the magnitude of AB or the length of AB or the norm of AB. Similarly, if we are denoting the vector with the word B, then the magnitude or the length or the norm will be this. It is an absolute value. It is an absolute value. This is an absolute value. Therefore, we know that it will always be positive. ये कभी भी negative आपके पास नहीं हो सकता. Either this quantity, both of the quantities will either be zero or both of them will be positive. या तो zero हो सकती है या positive हो सकती है, because this is an absolute number and it can never be negative. तो ये तो हो गया बेटे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ क्या होती है या नॉर्म क्या होती है। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है कि जब भी हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी हो, अगर हमारे पास जो वेक्टर v था, इट वाज x y, there will always be an x coordinate of a vector and y coordinate of a vector if we are talking in the two-dimensional geometry, if we are dealing with the two-dimensional geometry. ठीक है, आपको पता है कि टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल क्या होती है। टू डायमेंशनल में बेटे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन होती है। The one dimension is x-axis and the other dimension is y-axis. While in the three dimensions, there are three dimensions. One is the x-axis, other one is the y-axis, and the third one is z-axis. आपको पता है कि टू डायमेंशनल इज प्लेन, थ्री डायमेंशनल इज स्पेस। बहरहाल ये लंबी डिस्कशन हो जाएगी। और वेक्टर को भी वेक्टर टू डायमेंशन में भी हो सकता है और वेक्टर थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है। टू डायमेंशन में भी हो सकता है और थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है। फिलहाल बेटे जो हमारी डिस्कशन है, हम वेक्टर को टू डायमेंशन में डिस्कस करेंगे, हम थ्री डायमेंशन में डिस्कस नहीं करेंगे। बट कीप इन माइंड दैट ऑल ऑफ द डिस्कशन that will be going on regarding the vector, it can also be discussed in the three dimensional geometry. थ्री डायमेंशनल में भी इस डिस्कशन को लेके जा सकते हैं, बट अभी जो है वो फिलहाल हम टू डायमेंशनल की बात करेंगे। तो बेटे टू डायमेंशनल वेक्टर में there will be an x coordinate and there will be a y coordinate. एक x coordinate हुआ करेगा और एक y coordinate हुआ करेगा। ये है this is v. Like we can say v is equal to -4 and 3. -4 and 3. -4 is the x coordinate, 3 is the y coordinate. Now what is the formula for the norm of the same vector? It is under root x square plus y square. It is under root x square plus y square. This quantity is always positive. Whenever you have to calculate the norm of the magnitude or the length of the vector, what will you do?
you will just apply the formula. You will take the sum of the square of both quantities, and then you will take the under root. This is the magnitude or the length at the norm of the vector. Now, what is a unit vector? What is a unit vector? A unit vector, a unit vector is a vector having magnitude or length 1. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ, जिसकी नॉर्म 1 हो, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर. A vector having the magnitude 1, जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो या 1 हो, जिसकी लेंथ 1 हो, उस वेक्टर को बेटे हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का. अब यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. हम v लिखते हैं और v के ऊपर एक हैट लगा दिया जाता है. v के ऊपर एक हैट लगा दिया जाता है. v जब जब हैट आएगा तो आपने समझ जाना है कि बेटे दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. व्हाई? क्योंकि इसके ऊपर ये हैट आ रहा है. जब जब किसी वेक्टर के ऊपर हैट आएगा v हैट, तो उसका मतलब ये होगा कि ये यूनिट वेक्टर है. v हैट किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जा सकता है? ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर v को अगर हम उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, if we divide a vector v by its length, if we divide a vector v by its length, then we obtain the unit vector. अगर यूनिट वेक्टर, अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए, फॉर इंस्टेंस कि आपको दे दिया जाए कोई ए बी वेक्टर, मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं आपके पास कोई u वेक्टर दे देती हूँ और मैं आपके पास कोई u वेक्टर दे देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि यूनिट वेक्टर्स फाइंड कीजिए. तो आपने क्या करना है कि सिंपली इन वेक्टर्स को, इनकी लेंथ फाइंड करनी है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, और इन वेक्टर्स को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देना है. तो ऐसे हम हासिल कर सकते हैं यूनिट. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर्स के लिए कि अगर किसी भी वेक्टर ए बी का initial or terminal point same हो जाए, if the initial and the terminal point of a vector becomes the same, then this vector becomes the zero vector or null vector. ये देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि this will be the initial point for A and it will be the terminal point for AB. This is the initial point of AB and this is the terminal point of AB. अब अगर इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, यानी कि इस केस में क्या होगा कि यही इनिशियल पॉइंट है और यही टर्मिनल पॉइंट, यही इनिशियल पॉइंट है और यही टर्मिनल पॉइंट है, तो इसका मतलब कि वेक्टर कहीं आगे नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं है. द सेम इज द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए और बी बिल्कुल सेम हो जाए, वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, देन दिस विल बी कॉल्ड एज जीरो वेक्टर. देन दिस विल बी कॉल्ड एज जीरो वेक्टर. अच्छा, आप जीरो वेक्टर को भी बेटे कैसे डोनेट करना है? एक जीरो के नीचे एक बार लगा देंगे, जीरो के नीचे एक बार लगा देंगे, तो ऐसे it indicates the zero or null vector. Zero or null vector. इस केस में A भी आपके पास और B भी, ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है. This indicates the zero or null vector. Two vectors are said to be. अच्छा, अगर हम सिंपल जीरो लिखते हैं बेटे, this zero is a scalar quantity. This zero is a scalar quantity. ठीक है, ये जीरो जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं. If there is a bar below the zero and zero is written in bold letter एक लिखा हुआ है, उसके नीचे एक बार है, then this zero will not be a scalar quantity. This zero will be a vector quantity. This zero is scalar. This zero is vector regarding the direction. Okay. Two vectors are said to be negative of each other if they have the same magnitude but opposite direction. हम कहते हैं कि किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है? This is the vector AB. अच्छा, अब इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव विल बी माइनस ए बी. नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अगर आपके पास इस वेक्टर को बेटे हम नाम दे रहे हैं ए बी का, ठीक है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रही है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ ए बी. ठीक है, एक ऐसा डायरेक्शन कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहे, ठीक है. मैग्नीट्यूड, अब देखिए कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज पॉइंटेड टुवर्ड्स, दिस वेक्टर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द राइट, दिस वेक्टर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. दिस इज ए बी वेक्टर एंड दिस इज
minus AB. This is minus AB. Is this point clear? AB vector is pointed towards the right and minus AB vector will be pointed towards the left. दो ऐसे वेक्टर्स जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, इन वेक्टर्स को हम कहते हैं द टू वेक्टर्स आर द नेगेटिव ऑफ ईच अदर. अच्छा, इस नेगेटिव वेक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आपके पास माइनस ए बी है तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं बी ए. माइनस ए बी मीन्स बी ए. माइनस ए बी मीन्स बी ए. आगे देखिए, ये आपका पॉइंट ए था और ये आपका पॉइंट बी था. सिमिलरली दिस पॉइंट वाज ए एंड दिस पॉइंट वाज बी. ये जो माइनस ए बी है, ये जो अब लेफ्ट की तरफ जिसकी डायरेक्शन हो गई है, तो दिस इज पॉजिटिव बी ए. माइनस ए बी को आप लिख सकते हैं बी ए. अच्छा, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है किसी भी वेक्टर की? स्केलर से मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, इज इट वैलिड फॉर वेक्टर्स? यस, दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो वैलिड फॉर वेक्टर्स. अगर कि आपके पास एक वेक्टर v है और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, फॉर इंस्टेंस किसी स्केलर से, स्केलर मींस अ नंबर, जैसे 2 है, जैसे 4 है, जैसे 5 है, किसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं. दिस थिंग पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. और उसको कैसे करेंगे? अगर आपके पास बेटे ये वेक्टर है ए बी, अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं दिस वेक्टर इज ए बी, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं 2ab, व्हाट विल बी 2ab? दिस वेक्टर, दिस इज 2ab, ab 2ab. देखिए इसको मैं हॉरिजॉन्टली बनाऊं ये ज्यादा ठीक रहेगा. दिस वेक्टर इज ab, दिस वेक्टर इज ab, देन 2ab हमारे पास क्या होगा? द वेक्टर दैट इज डबल इन मैग्नीट्यूड. The vector that is double in magnitude and same in direction, it will be 2ab. अगर a b हमारे पास ये है, then what will be 2ab? A vector that is double in the magnitude or length and is same in direction, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम कहेंगे 2ab. What will be minus 2ab? Minus 2ab बेटे क्या होगा? A vector that is double in the magnitude, a vector that is double in the magnitude but that is opposite in direction, क्योंकि here is the minus sign. तो अब अगर ए बी की डायरेक्शन राइट की तरफ थी तो माइनस 2ab की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी, बट द लेंथ विल बी डबल. इफ AB is directed toward the right, minus 2ab will be directed towards the left and the magnitude will be double due to this thing. Similarly, if we want to take 4 times AB, then 4 times AB, what will be 4ab? 4ab will be a vector in the same direction and the magnitude or length will be 4 times of this vector. अगर इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी. अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, but the direction will be remain same. And what will be minus 4ab? The magnitude or the length will be 4 times of this vector, but the direction will be opposite. So if v is a vector, then what will be kv? What will be kv? What will be kv vector? इसके ऊपर सॉरी डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती. What will be kv vector? If k is a positive number, if k is a positive number, then kv will be the same in the same direction like v. If k is a negative number, if k is positive, then the direction will remain same. If k is negative number, then direction will be opposite. If direction is same, if k is a positive number, then the direction will remain same. If k is a negative number, then the direction of kv and v will be opposite. ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाए. अब हम फाइंड कैसे करते हैं? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. अगर हमारे पास ये वेक्टर v था और अगर ये था कि -3 into 2, then what will be 2 times v? It will be 2 times -3 into you will multiply 2 with each coordinate. 2 into -3 is -6, 2 into 2 is 4. So this is the vector 2v, -6 and 4. Similarly, you can multiply any vector with any scalar quantity. What you have to do, you will multiply the scalar with each coordinate separately.
Now, next we will consider the term of equal vector. Equal vector. दो vectors equal कब होंगे? Two vectors will be equal when they have the same magnitude and same direction. Two vectors will be equal when both of the vectors will be having the same magnitude and the same direction. If the two vectors are having the same magnitude and the same direction, they are called equal vectors. The vectors A, B and C, D are same, are equal because both of them are having the same magnitude and length and same direction. Therefore, both of the vectors are equal. Now, what is the term parallel vector? What is the term parallel vector? Parallel vector क्या होता है? Parallel. Parallel vectors. Two vectors are called parallel if they are non-zero scalar multiple of each other. If they are non-zero scalar multiple of each other. For instance, parallel vector के non-zero scalar multiple हों एक दूसरे के, तो ये scalar multiple होने का क्या मतलब है हम अभी जरा डिस्कस करें. If this is a vector AB, then this vector going in the same direction but having a different magnitude, we will name it as CD. This vector, sorry, this vector that is having the opposite direction, it means minus AB. This vector that is 2 times AB, 2 times AB. All of the vectors are parallel. All of the vectors are parallel. A vector, whether in the same condition or in the opposite direction, if a vector is the scalar multiple of the original vector, this was the original. If a vector is the scalar multiple of each other, यानी कि अगर ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, अगर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, अगर ये इसका ये फॉर इंस्टेंस जैसे फॉर इंस्टेंस इट वाज 3/2 AB. अगर AB का कोई भी स्केलर, दिस इज वी कैन राइट -AB as -1 into AB. Any scalar multiple of AB, any scalar multiple of AB, whether a positive or negative, it will be, the two vectors will be parallel. Any scalar multiple of AB will be parallel to AB. ये -1 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट दिस विल बी पैरेलल टू AB. ये 3/2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, बट द डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, so the two will be called parallel. This is 2 times AB. This is the scalar multiple of AB, therefore the two vectors are parallel. कोई भी scalar multiple अगर AB का हो तो ये vectors को parallel है. लेकिन अगर हमारे पास AB यूं है, this is the vector AB and this is the vector CD, you can see that the direction of the two vectors is quite different. दोनों की direction बहुत different है. ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल horizontal vector है, ये जो है ये diagonally जा रहा है, तो लिहाजा ये दो vectors कभी भी parallel नहीं, ये दो vectors कभी भी parallel नहीं हो सकते. ठीक है, similarly these two vectors can never be parallel, but any vector like these two will be parallel. These two vectors are parallel. All of these vectors are parallel, but any vector having two different directions, they will not be. Now we will study the addition of two vectors. The addition of two vectors. दो vectors को add कैसे किया जा सकता है? दो vectors को add कैसे किया जा सकता है? Addition of two vectors. Addition of two vectors. Mathematically, this concept is quite simple. Like if you are given the two vectors U and V, and you have to add them, तो आप क्या करेंगे? You will add the x coordinate of both vectors and you will add the y coordinate of both vectors. The result will be 2 minus 4, 1 plus 5. The result
or the sum of two vectors will be minus 2 and 6. This will be u plus v. If you have to add the two vectors, what you have to do, you will simply add their x coordinates and then you will add their y coordinates and you will obtain the desired result. This was the mathematical concept of addition of two vectors. Now, if we want to see it graphically, there is a triangle law of addition. Triangle law of addition. देख लेते हैं कि triangle law of addition क्या है. अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अगर आपके पास कोई triangle हो, for instance, this is the triangle. This is a triangle A, B, and C. This is a triangle. For instance, we name this vector U and we name this vector V. For instance, U is the side AB of the triangle ABC and V is the side BC of the triangle ABC. Then what will be the sum of U and V? The triangle law of addition for vectors, the triangle law of addition for vectors says that AC, the third side, will be the sum of these two vectors. What is the triangle law of addition? The triangle law of addition for vectors is that if AB side is representing the U vector and V vector is the side BC of the triangle, then AC side will be the sum of U and V. Similarly, in other words, we can say that if the terminal point of U, this is the terminal point of U, if the terminal point of U vector is the initial point of V vector, if the terminal point of U vector is the initial point of V vector, then if we join the initial point of U and the terminal point of V, then this vector will be the addition of U and V. In simple words, if there is a triangle A, B, and C, and U vector is along the one side and V vector is along the other side, where V vector, the initial point of the V vector is same as the terminal point of U, then AC will be the sum of these two vectors. And we will write it as AC vector is equal to AB plus BC. AB plus BC is equal to AC vector. This is the triangle law of addition. Triangle law of addition. Now, how can this law be applied? अगर आपके पास एक A वेक्टर है, ठीक है, और आपने इसको अगर हम फॉर इंस्टेंस के U1 का नाम दे देते हैं, और अगर बेटा आपके पास कोई वेक्टर दिया गया है U2, तो आपने क्या करना है कि आपने इस वेक्टर को इधर प्लेस कर देना. आप इस वेक्टर को इधर प्लेस कर देंगे. क्यों इधर प्लेस करेंगे? ताकि इसका इनिशियल पॉइंट इसके टर्मिनल पॉइंट से कोइंसाइड, इसका इनिशियल पॉइंट इसके टर्मिनल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाए. देन according to the triangle law of addition, this side of the triangle will be the sum of U1 and U2. This side, the third side, will be the sum of U1 and U2. This is the triangle law of addition. Now there is another law of addition, that is parallelogram law of addition. Parallelogram law of addition. Parallelogram law of addition क्या है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास ऐसे हों, फॉर इंस्टेंस दिस वेक्टर इज AC vector and this vector is AB vector. For instance, these are the two vectors, एक AC vector है और एक AB vector है. अगर आपके पास, ठीक है, एक AC vector है और एक AB vector है, और अगर हम इन दो वेक्टर से, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट ऑफ AC सेम एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है. अब हम अगर इससे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, हम इससे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. दिस इज द पैरेललोग्राम जो कि हमने ड्रॉ किए. ये पैरेललोग्राम है जो कि हमने ड्रॉ किया. देन the diagonal of this parallelogram will be the sum of these two vectors,
will be the sum of these two vectors. It will be AB plus AC. Then the diagonal of, if you place the two vectors along the two sides of the parallelogram, like AB and AC. If you place two vectors along the two sides of the parallelogram, like AB and AC, then the diagonal of the same parallelogram will be the sum of these two vectors. The diagonal of the same parallelogram will be the sum of these two vectors. It is the sum, और sum को बेटे resultant B हम कहते हैं, इसी को हम resultant B कह सकते हैं. पैरेललोग्राम होती क्या है? पैरेललोग्राम ऐसी एक फिगर जिसकी फोर साइड्स होती हैं, ऐसी एक फिगर जिसकी फोर साइड्स होती हैं और जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ और डायरेक्शन सेम होता है, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं. जैसे यहाँ पर अगर ए बी और सी डी हो, then this shape will be a parallelogram if AB is equal to DC. If AB is equal to DC and BC is equal to AD, तो इस shape को हम पैरेललोग्राम. This was the parallelogram of the parallelogram rule of the addition. Unity rule क्या है कि if you place the two vectors along the two sides of the parallelogram, then the diagonal of these two vectors will be then the diagonal of this parallelogram will be the sum of. अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. The example is find the sum of the vectors A, B and C, D. Find the sum of the vectors A, B and C, D. What does it mean that we have to find A, B plus C, D? Find the sum of the two vectors A, B and C, D, where A point is minus 1 and 1 and minus 1. 1A minus 1, B is 2, 0 and C is minus 1 and 3 and D is minus 2 and D is minus 2 and what will be OA? OA will be if A vector is 1 minus 1, OA will be I minus J. OA will be I minus J. What are these terms I and J? I and J are the two vectors, unit vectors in the direction of x-axis and y-axis. I and J vectors are two unit vectors in the direction. I vector is a unit vector in the direction of x-axis. J vector is a unit vector in the direction of y-axis. I and J are two unit vectors in the direction of x-axis or y-axis. एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बेटे हम आई का नाम देते हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे का नाम देते हैं. अब होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट गिवन है, फॉर इंस्टेंस कि मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर अगर पॉइंट है 3 and 4, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज नॉट अ वेक्टर. ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, ये कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है. दिस पॉइंट इज 3 and 4, द एक्स कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट इज 3 and the y कोऑर्डिनेट इज 4. देन अगर आप अब आपने ये तो आपको पॉइंट गिवन है, अब आपने वेक्टर्स की डिस्कशन करनी है, तो वेक्टर कैसे बनाएंगे? दिस इज द ओरिजिन ऑफ, दिस इज द ओरिजिन ऑफ. अगर आप इस पॉइंट को ओ से मिला देंगे, ओरिजिन से मिला देंगे, तो ये बन जाता है इसका पोजीशन वेक्टर. दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर OP. दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर OP. दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर OP. अच्छा बेटे, इस तरीके से अगर हम किसी भी पॉइंट, आपके पास ये P पॉइंट गिवन था, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट दे दिया जाए और अगर आपको उसको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़े, पोजीशन वेक्टर होता क्या है? फॉर इंस्टेंस आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, OQ की बात हो रही है. OQ विल बी द पोजीशन वेक्टर एंड OQ विल बी दिस. दिस इज द पोजीशन वेक्टर OQ. अब फॉर इंस्टेंस के Q अगर पॉइंट है, Q अगर पॉइंट है फॉर इंस्टेंस 2 and 3. For instance, Q is the point 2 and 3. Okay. What will be OP and what will be OQ? If P is 3, 4, OP will be 3 in the direction of I plus 4 in the direction of J. If Q is 2, 3, OQ will be 2 in the direction of I plus 3 in the direction of J. Or you can read it as 2 in the direction of x-axis plus 3 in the direction of y.
and you can read it as 3 in the direction of x-axis, 4 in the direction of y-axis. So these two are the representation for the position vectors OP and OK. Similarly, we are writing here the position vector for OA. A was a point, but the position vector OA will be I minus j. Similarly, the position vector OB will be 2I plus 0j. ठीक है, और आप चाहें तो आप इस j वाली टर्म को स्किप कर सकते हैं because the coefficient here is 0. Similarly, the position vector OC will be minus I plus 3j, and the position vector OD will be minus 2I plus 2j. So all there were the 4 points given और हमने उन चारों पॉइंट्स के बेटे पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए हैं. हमने सबसे पहले ये देखा कि पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है. नाउ व्हाट इज ए बी? अगर आपके पास कोई भी वेक्टर हो ए बी, यू कैन राइट इट एज ओ बी माइनस ओ बी. यू कैन राइट इट एज ओ बी माइनस ओ बी. कैसे लिख सकते हैं? फॉर इंस्टेंस ये ए है और ये बी है. अगर ये आपके पास for instance, this is the vector AB. This is the vector AB. This is the position vector OA. And this is the position vector OB. एक बात आपने ज़हन में रखनी है, position vector is always pointed towards the point. Initial point is origin and the terminal point is the point. OA vector जो है, position vector जो है, इसका इनिशियल पॉइंट O होगा और टर्मिनल पॉइंट A होगा. OB वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट O होगा, टर्मिनल पॉइंट B होगा. इट इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द. ठीक है. अब देखिए कि मैंने क्या लिखा है कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि AB प्लस OA इज इक्वल टू OB. हम इसको जरा कंफर्म कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से. AB प्लस OA और OA प्लस AB. OA प्लस AB हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में कि अगर दो साइड्स ट्रायंगल की आपके पास हो जाए OA एंड AB, जबकि एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट हो, then the third side will be the sum of these two vectors. OB will be the sum of OA and AB. OB will be the sum of OA and AB. OB is the sum of AB and so according to the triangle law of addition. So in short बेटे आपके पास अगर आपके पास AB हो तो आप उसको लिख सकते हैं OB minus OA. CD हो तो आप उसको लिख सकते हैं OD minus OC. ठीक है, तो AB को हमने कैसे लिख लिया? OB minus OA. अच्छा, what was the OB vector? OB vector मैंने आपको बताया था कि बेटे you can skip the J part because the coefficient is 0. So we write 2A minus OA vector. OA vector is I minus J vector. Solving the 2 minus I vector plus J vector. अब यहाँ पर आप ऐड कैसे करते हैं? I वाली टर्म्स को एक साथ जरा लिख लेते हैं. 2 minus 1 in the direction of I plus J, it is equal to 1 in the direction of I, या 1 I की बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ I लिख रही हूँ. 1 I की बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ I लिख रही हूँ. This is the vector. This is the vector AB. हमें फाइंड क्या करना था? AB वेक्टर हमारे पास क्या आया है? AB वेक्टर is I plus J. हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था AB plus CD. हमें फाइंड करना है AB plus CD. तो इसके लिए बेटे हमें क्या फाइंड करना है? CD फाइंड करना है. Similarly, we can write CD as OD minus OC. What is OD? OD is minus 2I minus 2I minus 2J minus sign OC, sorry, plus 2J. This is plus 2J. Minus sign OC is minus I plus 3J minus I plus 3J minus 2I plus 2J plus I minus minus plus minus plus minus 3J
I वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, -2i प्लस 2j -3j। अब हम इसको डायरेक्ट, लास्ट टाइम मैंने कॉमन लिया है और ए भी फाइंड करने के लिए आप कॉमन भी ले सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -2 और इसका कोफिशिएंट है +1, -2 + 1 इज -1 +2 -3, +2 -3 will be -1, so the result will be -i and -j. The result will be -i and -j. Now we have to add AB and CD. It will be I plus j plus -i minus j. It is equal to I plus j minus I minus j. अच्छा, इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, I minus I plus j minus j. 1 plus minus 1. 1 plus minus 1 is 0. 0 in the direction of I. Plus 1 plus minus 1. 0 in the direction of j. 0 in the direction of j. 0 in the direction of I and 0 in the plus 0 in the direction of j. This is 0 vector. 0 in the direction of I plus 0 in the direction of j. This is 0 vector. What does it mean? It means that AB plus CD is equal to 0 in the direction of I plus 0 in the direction of j, or you can say the result is 0 vector. 0 vector. I hope that all of the content is clear to the audience. So we will just end the discussion. Thank you everyone.